In Pakistan alone, it is estimated that every year between 1,000 and 2,000 girls are being abducted, forced to convert to Islam, and then are forcefully married off with their abductors. These children are then sexually abused and used as slaves within the household. Eventually, many of these girls end up in prostitution. These young girls are carefully selected by perpetrators not only on their appearance, but also on their family's ability to fend for themselves. The abductors usually choose girls which belong to minority religions. It is extremely difficult to fight this in court when the judge often favours the teachings of Islam. According to Islam, girls can be married as soon as they enter puberty, somewhere around 9 years old. That is why these girls are first forced to convert to Islam before marrying their abductors. October 25th, 2022. Mashal Rashid was abducted from her home whilst getting ready for school. Outnumbered, her father was knocked unconscious as Mashal was taken away. मैं और मेरे पापा हम दोनों घर पे थे, तो मैं रेडी हो रही थी और कुछ लोग हमारे घर आए, तकरीबन 4 से 5 लोग, 3 से 4 लोग थे और उन्होंने आके मतलब पापा को बेहोश किया, मारा भी और मुझे भी बेहोश किया और मारा भी था और मुझे लेके अपने साथ चले गए और उसके बाद ने काफ़ी ज़्यादा मुझे मारा था और थ्रेट किया था और उसके बाद When a girl is abducted, like in Mashal's case, she is often beaten, raped and threatened to have her family killed if she does not convert to Islam and marry her abductor. उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते रहे, जिससे कि दिस gets a cut एंड काफ़ी ज़्यादा थप्पड़ भी मारे और काफ़ी ज़्यादा मुझे मारते रहे और बाबा मतलब धमकियाँ देते रहे कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम आपकी फैमिली को मार देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो हम मतलब बहुत ज़्यादा मुझे थ्रेट करते थे और मारते भी काफ़ी ज़्यादा थे और इससे मुझे तो जो लोग मुझे लेके गए थे वो एक जगह पे नहीं रखते थे और अलग अलग जगह पे रखते थे और वो 3 से 4 लोग थे और उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती भी करी, सेक्स एंड और काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने मुझे टॉर्चर भी किया था, मारा भी था. After months of being imprisoned, Mashal was able to escape while her abductors were being distracted by the death of a family member. She returned to her father and together they have been in hiding ever since. With the support of the Jubilee campaign, Mashal and her family have managed to hire a lawyer to take her abductor to court. Her marriage with this older man is still deemed legitimate. And even with the financial help they are receiving, Mashal is unable to legally win her freedom from this marriage. और मैं अपने वकील के साथ कोर्ट में जाती हूँ तो वहाँ पे सब कुछ बताती हूँ और जज बहुत बुरा बिहेव करता है और हमारी फ़ाइल को फेंक देता है और काफ़ी दफ़ा हम लोग ऐसे जा चुके हैं और काफ़ी दफ़ा ऐसे ही होता है और वो बात सुनते ही नहीं है. जब पता चलता है कि ये थोड़ा सा मज़हब का इशू है तो वो फ़ाइल को फेंक देते हैं. कोई भी नहीं सुनता और ना कोई इंसाफ दे रहा है, यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है. करता हूँ कि मेरे केस को देखा जाए. मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इस केस को प्रॉपर तरीके से चलाकर मुल्ज़मान को सज़ा दी जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए. हम बहुत परेशान हैं. पाकिस्तान में हमारा जीना हराम हो चुका है. Many Christians and Hindus are destitute and are unable to file a lawsuit to get their daughters back. People from minority religions automatically fall under the secular law and in principle they do not have to worry about Sharia laws. However, the moment an underage girl is kidnapped and forced to convert to Islam, she then falls under Sharia law. When a girl becomes a Muslim, she no longer needs parental consent to marry, and so her abductor is free to legally marry her. It is very hard to prove in court that the conversion was forced. The girl in question is blackmailed into signing papers, and in her statement, she says she voluntarily converted. In Pakistan, new legislation has recently been introduced
so that the marriage of children under the age of 18 is now in principle illegal. Yet, many judges still apply Sharia law, which states that a girl may marry as soon as she menstruates and enters puberty. मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ बहुत दफ़ा आई हूँ और हर बार मेरे साथ बहुत बुरा होता है और मेरा केस रिजेक्ट कर दिया जाता है, फ़ाइल फेंक दी जाती है और फ़िलहाल मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं बार बार यहाँ आती हूँ और मुझे ये भी डर लगता है कि वो मुझे शूट ना कर दें कहीं और मुझे फिर से उसके पास ना जाना पड़े। April 30th, 2022. At just 12 years old, Zavia was abducted by a Muslim couple known to the family. She too was abused, beaten and threatened. She was forced to convert to Islam to legitimize the marriage with her abductor. और सिगरेट्स वगैरह भी मेरे हाथों पे लगाई हुई हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनसे मेरे साथ हुई हैं। वेन्स भी मेरे कट्स हुई हैं और काफ़ी बुरे तरीके से बिहेव करते थे, अच्छा नहीं थे रहते। मतलब आपने हमारी बात ना मानी तो आपके घर वालों को मार देंगे, अगर आप यहाँ से गई तो आपके मामा पापा आपको मार देंगे, आपने हमारी बात ना मानी तो हम ये कर देंगे आपके घर वालों को, आपके भाई को यहाँ पे लेके आएंगे तो उनको मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपके घर वालों को नुकसान पहुँचा देंगे अगर आपने हमारी एक भी बात ना मानी तो। 13 days after Zavia's family reported the abduction case, Zavia was rescued from her abductors. Instead of letting her stay the night in a children's home, she was put in a police cell together with the wife of the abductor. The police recorded her statement in which she declared to be 14 years old and that she had willingly converted to Islam and she had willingly gotten married. She also stated she did not want to undergo a medical examination. Because of this statement, her abductors were released and Zavia was put into their custody. The birth certificate and other documents that stated she was only 12 years of age were totally ignored. 2 months later, Zavia managed to make a phone call to one of her brothers. In this recorded conversation, Zavia declared the abductors had threatened to kill her brothers if she incriminated her abductors. It turns out this was the reason for her false statement. With this new evidence and with the support of an NGO, Zavia's parents made a petition to the High Court of Lahore to seek custody over their 12-year-old daughter. 18th of August 2022. The Lahore High Court ruled within minutes that the marriage of the 12-year-old girl was legitimate and that Zavia was forced to stay with her abductors. जब मेरी बेटी अगवा हुई थी मैं थाने गया हूँ, थाने वालों ने FIR काटी है बकायदा ये कि उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया इस मसले के ऊपर। जब उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया फिर हम घूमते रहे, हर दर पे गए, हर लोगों को आगे तरला किया, किसी ने नहीं हमारी सुनी। आखिर क्या हुआ, पुलिस वालों ने पैसा वैसा लिया, हमारे से भी लिया, अगली पार्टी से भी लिया, बात फिर भी कोई नहीं बनी। पुलिस वालों ने खीर की बात, बाकी क्या हुआ जब अदालत गए कहते हैं भी आपकी बच्ची ने मज़हब चेंज कर लिया, वो उसकी तो शादी होगी। मैं उनको चीखता रहा कि मेरी बेटी 12 साल की है, ये कैसे निकाह हो सकता है। उन लोगों ने कहा नहीं जी बस ये अब हो गया। फिर अदालत से मेरी बेटी को उन लोगों ने उसी कुत्ते के साथ वापस तोड़ दिया, भेज दिया। मैं फिर भी कहता रहा हूँ हरूनी यूसुफ से कि यार ये ज्यादती है। कहता जी आपकी बेटी ने उधर के बयान दे दिए। मैं कहा बयान तो वो ज़बरदस्ती के होंगे। In the weeks following, Zavia was starved, beaten and forced to work in a brick factory to earn money for her husband. She was forced to drink large amounts of alcohol and was sexually abused. Zavia attempted to escape multiple times. Each time she was caught, she would be severely punished. This included electrocution and burns via cigarette butts. Over time, she was so traumatized that she eventually tried to commit suicide by slitting her wrists. 3 months later, with the support of NGOs, Zavia's case generated a lot of publicity. Neighbours of her abductors recognized Zavia and reported the location to our rescue team. On the 22nd of November 2022,
the team managed to retrieve the traumatized girl from the property she was imprisoned in. Since then, Zavia has been home and protected by her family. One of Zavia's abductors, her ex-husband, is now in jail. With financial aid from the NGOs, justice has been served and Zavia now lives freely again with her family. She picked up her studies and is trying to live past the trauma that she's been put through. Zavia's family is one of the few lucky ones to have been given financial aid and publicity from the NGOs. Zavia's family managed to get some justice for the headache that they have lived through. Most families aren't so lucky. वो मुस्लिम था, उसको इंसाफ मिला है हर जगह पे, उसकी सुनाई हुई है, हमारी सुनाई, हम मसीह थे ना, हमारी इसलिए सुनाई नहीं हुई। उसको फ़ायदा हो गया इस बात का कि हम मसीह थे, हमें इंसाफ नहीं मिला, वो मुस्लिम था, उसे इंसाफ मिल गया। हम मसीह थे, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। उस आदमी के नाम के साथ मुस्लिम लगा हुआ है, उसको हर आदमी ने फ़ायदा दिया है। हमारे नाम के साथ मसीह आता था, हमें किसी ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। Most Muslims believe they will receive a heavenly reward for helping someone convert to Islam. For some, it doesn't matter how intentional or coercive the conversion is. In so many cases, the police and judges tend to favour the Islamic abductor because of these beliefs and because of the pressure from within the Muslim communities. With a lot of media attention and national and international political pressure, it is hoped that justice for these underage girls will prevail in the end.